So this is a doubt clearing session with respect to ethics. I got a doubt related to directives, that you are not able to understand the directives like discuss, elaborate, critically analyze. डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्कस, elaborate, evaluate, analyze, critically analyze, etc. etc. If you have gone through the sessions, in each session I have discussed 2 section A questions and 1 case study. And with that section A question itself, you would have understood that I hardly focus on directives. I do not even focus on directives. My focus is on breaking a question into subparts. What are the number of subparts in a question? My focus is on that. And when I focus on breaking the question into subparts, what I am doing is I'll address the demand of the question holistically. And then directive becomes irrelevant. So when they have asked for ethical implications or ethical considerations, I'll write both positives and negatives. Whether the directive is discuss, analyze, critically analyze, or whatever, I'll write both sides of the coin. So directives do not matter as per me. I have written 4 mains. Cliche to say that I have cleared them all, and never ever I focused on directives. This is my strategy. This has worked for me. I am sure it will work for you as well. So rather than the directives, focus should be on identifying as many subparts of the question as possible, and then make separate headings for each subparts and write answer in points. ठीक है. Second is source. So the material that I have given you, that is more than enough. You need not require any other material for ethics preparation, not even my book. जब मैं अपनी बुक के लिए बोल रहा हूँ नॉट इवन माई बुक, तो बाकी बुक्स तो गई. ठीक है, तो मेरी बुक ही जरूरत नहीं है, बाकी बुक्स तो भूल ही जाओ. नाउ द इशू इज n number of people have misses this query that they have studied ethics previously as well from some or other material. Now for those people who have already studied ethics from some or other material, trust me, your knowledge that you have acquired from anywhere will never go waste. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे नोट्स ही बहुत बढ़िया हैं और किसी के नोट्स बढ़िया हो ही नहीं सकते, या किसी और नोट्स में कुछ और बढ़िया हो ही नहीं सकता, या मेरे नोट्स में A to Z सब कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं है. Of course that is not possible. So my advice is, if you have already studied it from somewhere, then see whether that material can form the base material or not. How comprehensive your previous material was, how good number of keywords, theories, thinkers, PYQ, diagrams, etc. it has or not, examples, current affairs, etc. it has or not. If that material has all these aspects, then it can become your base material, and after that read my material, and whatever new you find in it, add to that base material. ठीक है. Otherwise, if you think that my material is worthy of making a base material, then whatever different you have in the previous material that you have studied, add that in my material. ठीक है. So this is how you have to consolidate your own notes. Nothing that you have studied already will go waste ever. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. हर नॉलेज कभी ना कुछ पढ़ा हुआ काम आता है आगे. So don't worry about that. Consolidate करो अपने notes को rather than running after a number of materials. This is about source. Third is crisp points. So one of the query that I got was that I am not able to write crisp points in my answers.
Related query was answer writing strategy. One more related query is interlinking theory. Another related query is related to examples, but I'll deal examples separately. So let me discuss these three queries here. Crisp points, answer strategy, and interlinking of theory. Now, you always get 13 questions in section A. Each question is a 10 marker. You have to answer the 10 marker question in 150 words. ठीक है? So this is your intro. Intro should be of max 20 to 30 words. Intro में क्या लिखते हैं? Whatever is the question, there must be some or other keyword in the question. Define that keyword in the introduction. ठीक है? It should be max 20 to 30 words. If the question appears to be from some current affair background, then mention the current affair background in say 20 words, 15 to 20 words max. There are questions on applied ethics, Russia-Ukraine war, digital technology, digitization, telemedicine, etc., etc. So these questions have certain current affair background attached to them, and hence that can be mentioned in the paragraph following the introduction. After that, identify the subparts in the question and make separate heading for each subpart. So अगर मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे कोई एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, डिस्कस एथिकल implications around issue of abortions and suggest steps. So intro, 15-20 words of current affair background, because this issue is in news lately. I hope you are aware of it, Supreme Court and High Court's rulings. And then in 15 to 20 words you will mention the current affair background. अब इस क्वेश्चन के कितने सब पार्ट्स हैं? Whenever I write implications, so implications are both positive and negative, and then the third part is steps. So there are three parts of the question. My first heading will become positive implications. I'll write 2 points. Each point is going to be of max 15 to 20 words. That is max 2-liner point, not more than that. Then I'll write negative implication 1, 2, again 15 to 20 words. Then I'll write steps, again only 2 points, 15 to 20 words each. I'll draw a diagram and I'll conclusion again in 20 to 30 words each. Now count the total number of words in this question. 20 to 30, 15 to 20 for current affair. This is intro, this is current affair. Then in the points, you have 6 points in this answer, each point being 15 to 20. 6 into 15 to 20. And you have a conclusion of 20 to 30 words. Total कितना हो गया? Lower side total if I take 35, 35, 125, 35, 125 और ये हो गया 145 lower side. Higher side 150, 170, 180. So now with this breakage that I have shown you live, you would have understood that it is very difficult to write more than 4 or 5 points in ethics paper. यहां मैंने अभी एग्जाम्पल्स भी नहीं लिखे हैं. I have not even mentioned example. And during the course of sessions, you would have seen that in every question I have written, I have asked you to write 2 examples.
एटलीस्ट वन, वो तो लिखना ही है, एंड दैट एग्जाम्पल विल ऑल्सो टेक 15 to 20 वर्ड्स. सो दिस इज द चैलेंज ऑफ एथिक्स आंसर राइटिंग. You have to write crisp points within 15 to 20 words. Now let me tell you, ये तो हो गया चलो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी कवर हो गई. नाउ क्रिस्प पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? सो you would have seen over the years that in your own discussions कि अगर कोई चीज आपको पता है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, then you will be able to explain it easily to others. But if you are not aware of a certain thing yourself, then you will go on elaborating that concept again and again in depth that is not required. So the first and foremost thing to be able to write a crisp answer is to be crisp with your knowledge, with your concepts. मेरे concepts जो हैं वो crisp होने चाहिए. For example, now if I have to write negative implications of abortion while linking with ethics, अगर मैंने ethics नहीं लिखा तो marks नहीं मिलेंगे मुझे. So I have to write the negative implications and I have to link them with ethics as well. So यहाँ पे negative implication क्या होगा कि इशू ऑफ एबॉर्शन का नेगेटिव इंप्लीकेशन एक हो सकता है इन लाइन विद एथिक्स इज दैट इट ट्रीट्स ह्यूमन एज अ मींस rather than end in itself, in line with categorical imperative 2. कितने वर्ड्स हुए? It treats human as means rather than ends, in line with categorical imperative 2. That is around 15 words. Around 15, 14 to 15 words में मैंने थ्योरी लिंक कर दी और जो मुझे पॉइंट लिखना था मैंने वो लिख दिया. ह्यूमन यहाँ पे क्या है? ह्यूमन ऑफ कोर्स यहाँ पे फीटस है. इन द रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज इक्वेटेड फीटस एज अ लिविंग ह्यूमन. ठीक है, सो ऐसे पॉइंट लिखने. नाउ हाउ ऑन द गो live I am able to do that is because my concepts are very clear with respect to what CI2 says, what CI1 says, क्या थिंकर ने क्या बोला है, किस थ्योरी में क्या है. So I can apply that in my answers in a crisp manner. So my advice is work on your concepts like I have taught while linking the theories with n number of topics, n number of questions and issues. Read that with this similar perspective कि इसको कहाँ यूज करना है. सिर्फ पढ़ लिया, क्लास देख ली, मजा आ गया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक you will not be able to reproduce that in your answers. So whatever you are reading with respect to ethics, read it from perspective of using that in your answers. ठीक है. Then comes notes. सो एथिक्स के नोट्स में क्या चाहिए होता है आपको? रिवर्स इंजीनियरिंग करो. एथिक्स के आंसर्स में मुझे क्या चाहिए? आई वांट कीवर्ड्स, आई वांट एग्जांपल्स, आई वांट लिंकेज विद सर्टेन थ्योरी, मेंशन सर्टेन थिंकर एटसेट्रा. यही 4 चीजें चाहिए मोस्टली मुझे एथिक्स के आंसर्स में. आई होप यू ऑल एग्री विद मी. एंड हेंस द नोट शुड हैव ओनली दीज थिंग्स. Nothing else is required. Now you have to set a border as well, a boundary as well. कि कितने keywords, कितने example, कितनी theory, कितने thinker. बहुत easy है. Keyword से मैं क्या समझता हूं? For me, integrity, accountability, honesty, rule of law, etc. are not keywords. ये सिर्फ मियर जुमले हैं छोटे मोटे से जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में चाहे जितने लिख दो. दे डू नॉट एड एनी वेट टू योर आंसर एज पर मी बिकॉज दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स. ये सबको पता है कीवर्ड्स, क्लीशे कीवर्ड्स है. फॉर मी कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स मींस स्यादवाद. ये भी सबको पता है, लोग लिखेंगे नहीं आंसर में.
फॉर मी कीवर्ड इज आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे, या फिर लोकहित, लोक संग्रह. So such keywords you have to identify from your notes. I have not given separate list of keywords. I'll not give separate list of keywords. उस level की spoon feeding I never promised. You have to do that exercise yourself. I can only help you with one pointer. Okay, make sure that if you have a list of 50 to 60 keywords, 50 to 60 keywords, then 10 are from religions, various religions that I have taught you in the sessions. 10 keywords should be from thinkers concepts, Socrates ideal man, या Hobbes self preservation, social conscience या societal conscience of Durkheim, etc. 10 keywords should be basic theories like deontology, virtue ethics, supererogation, doctrine of double effect, doctrine of karma, etc. 10 keywords should be from syllabus. जो मैंने अभी बोला ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह, 10 कीवर्ड वो भी लिख देना. ठीक है. उसके बाद नाउ मिक्स एंड मैच. मे बी देर इज अ सर्टेन एरिया लाइक थिंकर और रिलीजन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट. सो लास्ट 10 कीवर्ड जो होंगे यू कैन मिक्स एंड मैच फ्रॉम देम, प्लस PYQs जैसे कि 7 सिंस या ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ ऑल, स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी आर पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये PYQs के बहुत बढ़िया कोट्स है, कीवर्ड्स हैं which can be replicated in your answers. So prepare this list of keywords. When this list of keywords is handy with you, it will change your world with respect to ethics answer writing. आपके points जो हैं, you will be able to write what you want and then उस कीवर्ड को लिंक कर दोगे. जैसे मैंने क्या बोला कि treating human as end rather than means in line with CI2. बस CI2 को मैंने लिंक कर दिया. मैं CI2 यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग Kant's view. I have written what I wanted. I am just linking it with CI2. So वो linkages आपकी तभी बनेंगी जब ये ready-made keywords list आपके पास ready है. Only then you will be able to write crisp points. तो ये notes prepare कर लो. Last of course revision. सिर्फ notes बना के रख दिए, उनको revise नहीं करा तो भी कोई फायदा नहीं है. तो वो जो एक सिंपल सी क्वेरी थी कि क्रिस्प पॉइंट नहीं निकल रहे, उसको लेके देखो कितना कुछ इसमें what all works in the background to ensure that you are able to write crisp points. वो low hanging fruit नहीं है, tough है, it will come through practice. So I have told you answer writing strategy. I have told you about crisp notes and crisp points भी हो गए. Now crisp examples. ठीक है. So the notes that I have given you have 435 plus examples. 435 plus examples and 68 of them are from current affairs. Current affair as in from the month of say May or June 2024, as recent as that. ठीक है. So if you will master these 68 examples, trust me, these are much more than what is required in your ethics paper. There are 13 questions in ethics paper. Even if you are writing 2 examples per question, तो 26 चाहिए. मान लो 3 लिख रहे हो, चलो तो 39 चाहिए. Not more than that is actually required. अब आप कहोगे कि ये जो एग्जांपल्स है हर जगह थोड़ी लिंक हो जाएंगे. आपके नोट्स पे फर्स्ट पेज पे एक एग्जांपल है, घाट कोपर में जो होर्डिंग कोलैप्स हुआ था मुंबई में, उसका एग्जांपल है. आई कैन राइट दैट एग्जांपल इन प्रोबिटी.
I can write that example in lack of integrity on part of the advertiser. I can write that example to explain 7 sins: commerce without morality, knowledge without character. I can write that same example in corruption nexus, maybe coercive, maybe collusive, whatever it is. I can write in both. I can write that example in laws, rules, and regulations as well. I can write that example to explain lack of social accountability in society. सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मैंने बताया 3-4 टाइप्स की है: अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, सोशल ऑडिट, सोशल अकाउंटेबिलिटी. सो व्हेन द पीपल देमसेल्व्स आर होल्डिंग द पब्लिक सर्वेंट और सर्विसेज अकाउंटेबल, दैट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी. कि सोसाइटी नजर रख रही है, सोसाइटी एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ओवर द एक्ट्स ऑफ द पीपल, अदर पीपल. तो अगर सोसाइटी ने वहां पे देखा होता कि ये इतना बड़ा होर्डिंग यहाँ पे कैसे है पेट्रोलियम के जस्ट बगल में, कल को कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है इससे, तो वो सोशल अकाउंटेबिलिटी में लिख सकता हूँ. I can write that one example in n number of areas. Conscience on the part of advertisers, laws versus ethics, even if the laws were followed. For example, hypothetically, अगर laws follow हुए थे, was it ethical? तो अब ये कैसे कर पा रहा हूं मैं लाइव? बिकॉज अगेन माई कंसेप्ट्स आर क्लियर. सो दैट लिस्ट ऑफ 68 examples from current affairs and even otherwise, for every topic there are 2 examples, 1 or 2 examples. I have ensured that there is no topic in my notes without any example. तो वही आप याद कर लो, you will be able to write them crisply. And again, you have to write examples in max 15 to 20 words. That is max 2-liner example, not more than that. Please do not elaborate. Now there are 2 ways to write examples. पहला हो गया, ये points है. So what people do is, ये point लिखा and after that they write a 1-word example. ये point लिखा, they write a 1-word example. And the second way is, you write 2 points and after that you write a 2-liner or 3-liner 15-20 word example. Both of the ways are correct. I generally prefer this methodology of writing elaborated example rather than 1-word example, and you will find my examples in the answers that you have got in similar lines. But you can follow that approach as well. So for example, if in question number 1 of your paper you have followed this approach, you have given 2 elaborated examples of 15-20 words each. In the next question, if you think that there are more points to write, कि मुझे पॉइंट ज्यादा लिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए, देन दिस इटसेल्फ, अब जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उससे क्लियर हो गया होगा कि this itself means that you will not have space to write an elaborate example. So here, in front of any 2-3 points, write 1-word example each. So you have to play around these 2 approaches, and the examples given in the notes are more than enough. Plus I'll be providing list of examples on my blog from current affairs, so you can refer that as well. How many thinkers? Okay, ये क्वेरी काफी इंटरेस्टिंग है कि कितने थिंकर्स पढ़ने हैं. दिस क्वेरी आई हैव रिसीव्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट in the thinkers chapter, philosophers chapter, I very well explained कि ये जो thinkers हैं in notes में, that are more than enough. Whatever thinkers that I have provided you are more than enough. And for each thinker, you have to remember only 2-3 main points. This fact also I explained very well in the class. I have focused only on 2-3 points for each thinker in class, like Socratic ideal man or Socratic ideal life or intellectualism. प्लस प्लेटो में ऐसी हैप्पीनेस पे फोकस करा है, सोल पे फोकस करा है. फिर क्यूको गो जब आया था तो उसमें दूसरे कंसेप्ट पे फोकस हुआ है. दुर्खाइम में सोसाइटल कॉन्शियंस पे फोकस है. हेगल में अलग कंसेप्ट पे. सो हर थिंकर के 2-3 पॉइंट्स ही चाहिए मैक्स. अब वो लिस्ट आपको अगर ज्यादा लग रही है, आइडेंटिफाई 10 थिंकर्स. फॉर ईच of these 10 thinkers, 2 to 3 points. So now you will have 20 to 30 points related to thinkers, and anyway not more than that is required, because thinkers are largely used in case studies.
as you would have also seen during the sessions, I have used Socrates, Kant, Hobbes, Kierkegaard, Aristotle, etc. in my case studies, Confucius. तो वो थिंकर्स तो मेन हैं, उतने तो आपको करने ही पड़ेंगे. एंड प्लीज फोकस ओनली ऑन 2-3 मेन पॉइंट्स फॉर ईच थिंकर. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न थिंकर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द इंडियन वंस, बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एटसेट्रा मैंने चैप्टर 2 या चैप्टर 1 में है आपके. ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज में है, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में मैंने पढ़ाया है वो. नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स thinkers from outside from that can also be asked. Like जेंडर इक्वालिटी पे एक क्वेश्चन आया था और सावित्री बाई फुले का कंट्रीब्यूशन पूछा था. अब एथिक्स में कोई नहीं पढ़ता है सावित्री बाई फुले को, तो ऐसा कोई नया थिंकर अगली बार भी आ सकता है. बट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दैट? You can only be prepared with respect to a generic list, and the list of thinkers provided by me are more than enough. Not more than that you should do. And for each thinker, even for Indian ones, focus on 2-3 main points. कि बुद्ध के 2-3 मेन पॉइंट क्या है, नानक के 2-3 पॉइंट क्या है, महावीर के 2-3 पॉइंट्स क्या है. नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. नेम्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ओके, सो द क्वेरी वॉज के सिविल सर्वेंट्स के नाम लिखने हैं या नहीं लिखने हैं. आई हैव टोल्ड दिस ड्यूरिंग द क्लास एज वेल के जनरली व्हाट इज द एक्सेप्टेड कन्वेंशन इज दैट, मतलब एक कन्वेंशन ये है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कहीं लिखा तो नहीं हुआ है कि लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बट जनरली इट इज प्रैक्टिस दैट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग पॉजिटिव, सो पॉजिटिव का नाम लिख लेते हैं. बट इफ यू आर राइटिंग इन नेगेटिव कंटेक्स्ट तो नाम एग्जैक्टली नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सटल होके लिखा जाता है. दिस इज not only true for mains but also for interview. But then there are certain events which are so much in public domain and established beyond doubt that you can write those names, like Pooja Khetkar. So I am 100% sure if 15,000 people are writing mains this year, at least 10,000 will mention her name somewhere or other in some or other question, so you can mention that name. But if there is a name of any civil servant where it is not, where the alleged crime is not established beyond a reasonable doubt, please do not mention the name. So positive लिख रहे हो या negative and public domain में है या नहीं, that depends that on these factors it will depend whether you have to write the civil servant names or not. Number of points. Okay, I have already told with help of the answer structure के 2 पेज हैं आपके पास. You have to write answer in 15 words. 1-2 for first part, 15-20 words. Then you will write one example. Second sub part of question, 1-2 example 2, 15-20 words. This itself will take 90 to 120 words. And then there is intro of 20 words, conclusion of 20 words. कहाँ स्कोप है इससे ज्यादा लिखने का? Is there any scope? Is there any possibility? You can judge it for yourself. There is no scope to write more than 4 to 5 points in ethics paper because the focus should be on examples. Focus should be on application of the knowledge rather than कि मैं बस keywords लिख दूं और मार्क्स आएंगे. नहीं होगा. सिर्फ कीवर्ड्स लिखोगे मार्क्स कम हो जाएंगे इनफैक्ट. So my focus should be not only on writing the keywords but linking them with current affairs, and that is very important with respect to the examples. ठीक है, रिवीजन कैसे करना है एथिक्स का. ओके, I have told you about note making. I'll tell you my personal experiences as well. So the list of keywords that I told you, 50 to 60 keywords, I also had made a spiral copy, very small spiral copy booklet इतनी सी जो मेरी पॉकेट में रहती थी. So उसमें I had a list of 50, 60, 70 keywords, and before my any mock test or mains exam I used to revise those keywords only. मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ता था. बुक
कंटेंट मटेरियल दोबारा मैंने नहीं पढ़ा, बस वो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. Why so? Because by then my idea about answer writing was very clear, that I'll write 2 points for one part and then I'll link them with keywords. मेरे वो points तो generic ही होने हैं, but keyword से link करना है. प्लस ऐसे ही एक एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना लो, 15, 20, 50 जितने एग्जाम्पल बना सकते हो. 68 तो नोट्स में ही है, वो एग्जाम्पल की सेपरेट लिस्ट बना लो. प्लस उसके बाद अगर जो थिंकर थ्योरी की मैंने एक्सरसाइज बोली है वो कर लो. सो नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. एंड every time you write a mock test or every time you attend any answer writing class of ethics, before that please revise that list of keywords. If you have already gone through all the sessions, particularly I am not sure how many sessions you have got, if you have gone through the last 3 classes, you will know this exercise already, that just before entering the exam hall I used to revise my list of 50 keywords, and as soon as I got the answer sheet, मैं रिवाइज करके गया हूं, मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है. आंसर शीट जैसे ही मुझे मिलती है उसमें रफ स्पेस होता है. इन दैट रफ स्पेस आई यूज टू राइट डाउन दोज 50 वर्ड्स इन 2-3 मिनट्स. जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में वो 50 वर्ड्स लिख देता था. नाउ इफ इन क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव यूज से कीवर्ड नंबर 2, कीवर्ड नंबर 5, कीवर्ड नंबर 11, कीवर्ड नंबर 17. सो ये 2, 5, 11, 17 जो मैंने यूज करा है, आई स्ट्राइक देम आउट सो दैट आई डू नॉट यूज देम अगेन इन माई आंसर्स. तो ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इसलिए बनानी इंपॉर्टेंट है. रिवीजन भी सिर्फ कीवर्ड्स की करनी चाहिए और एग्जांपल्स की, बिकॉज एंड गोल क्या है कि मुझे मार्क्स लाने हैं, मार्क्स इन्हीं चीजों से आएंगे. तो रेदर देन मैं 40-50 पेज के नोट्स बनाऊं एथिक्स के, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. टारगेटेड स्टडीज करो, रिवर्स इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो. रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कहती है कि मुझे आंसर अच्छे तब होंगे जब मैं कीवर्ड्स लिखूंगा, जब मैं एग्जांपल्स लिखूंगा. तो नोट्स भी वही बनाओ, उन्हीं को रिवाइज करो. दिस वॉज वन क्वेश्चन दैट आई गॉट. माइंड मैप का सेपरेट पीडीएफ चाहिए, वो नहीं मिलेगा. मैंने तमाम बार सेशंस में भी मना करा है that I had never committed. I'll only provide what I had committed. So this I am not going to provide separately. उसके बाद है link various topics with question. Okay. So I got this query that you are not able to link various topics of theory with questions. अब इसका आंसर मैं ऑलरेडी थोड़ा दे भी चुका हूं कि थोड़ा तो आपको देखो कंसेप्ट्स पे काम करना ही पड़ेगा. Only when your concepts are clear, you will be able to play around those concepts, those keywords, and use them in multiple answers. जैसे कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अभी मैंने लाइव यूज करा, या घाट कोपर होर्डिंग का जो मैंने एग्जांपल था, उसको मैंने n नंबर ऑफ कीवर्ड्स में अप्लाई करके आपको लाइव दिखाया. Why so? Why I was able to do it is because those keywords are very clear to me. Only then I am able to link that one example of current affair in n number of areas. मैं नेपोटिज्म भी डाल सकता हूं उसमें. हो सकता है नेपोटिस्ट उसमें कुछ एक्टिविटी रही हो, फेवरेटिज्म से मिला हो, नेक्सस से मिला हो, करप्शन एंगल हो, रूल्स एंड लॉज मैंने आपको बता दिया, कॉन्शियंस बता दिया, अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी. So n number of keywords can be linked that way. Now, one another way to do is to be thorough with at least the syllabus. जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है वो रट लो. नहीं हो रहा, चलो थ्योरी नहीं आ रहे, सेशन समझ, ठीक है, सिलेबस तो याद हो जाएगा. चैप्टर वाइज सिलेबस याद कर लो. दिस अप्रोच आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास एज वेल. जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिली है उसमें भी ये अप्रोच है. अब एक क्वेश्चन देखो, हाउ टू एंश्योर प्रोबिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन है. अब मैं इसमें चैप्टर वाइज पॉइंट्स बनाऊंगा. आई विल बी एबल टू लिंक थ्योरी, लिंक वेरियस कंसेप्ट्स टुगेदर. तो सिलेबस क्या कहता है? पहला चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फिर ह्यूमन वैल्यूज, फिर एटीट्यूड,
फिर एप्टीट्यूड, EI, फिलोसफर्स, public civic values and probity. These are the 8 topics of syllabus. अब probity के इस क्वेश्चन में I'll link these 8 topics. तो पहला है कि how to ensure probity in organization. EHI में what do we largely study? What I have taught you in EHI. मैंने आपको वेरियस थ्योरीज बताई हैं EHI में, ठीक है. सो एज अ पब्लिक सर्वेंट, इफ आई एम ड्रिवन बाय कंसेप्ट सच एज डेडिकेशन टू सर्विस या सुपर एरोगेशन या यूटिलिटेरियनिज्म, आई वांट टू सर्व ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, then I'll be able to ensure probity in organization. Human values, okay, I am not only aware about the teachings of leaders, but I implement them in my daily life, daily action. I'll be able to ensure probity. Attitude, if as a public servant or as even in a leader of corporate sector, if I am motivated and have positive attitude, और moral attitude में क्या think, एक क्या word पढ़ा है मैंने हिल्डेब्रांड में, awareness of responsibility. So if I am aware of my responsibilities, then I'll be able to ensure probity in organization. Aptitude में तमाम values हैं which can be used to ensure probity. I have taught you n number of values. Simple point बन सकता है. EI, so if I am self-aware of my actions, of my thought process, and I regulate them while empathizing with others, I'll be able to ensure probity. Similarly, philosopher से point बन जाएगा, एक एक point इनसे बन जाएगा. So this is how I am able to link theories, the theory that is studied in ethics with any damn question, any damn topic. अगर syllabus clear है और एक एक दो दो कुछ concepts आपको syllabus के पता है, ठीक है. I cannot explain more than this with respect to this topic because it depends on your skill as well. Conclusion. Okay. So largely there are two types of conclusion that can be written in ethics paper or any other paper for that matter. एक तो हो गया आपका gist based और एक होता है way forward. So way forward conclusion क्या है? कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टेप्स पूछे गए होते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस अराउंड इशू ऑफ एबॉर्शंस एंड सजेस्ट मेजर्स. अब मेजर्स ऑलरेडी पूछ लिए हैं, सो आई विल नॉट राइट वे फॉरवर्ड, आई विल राइट अ जिस्ट बेस्ड कंक्लूजन. हेंस देयर आर वेरियस एथिकल इम्प्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस अराउंड इश्यूज ऑफ एबॉर्शन. ये हो गया जिस्ट बेस्ड, 10 से 15 वर्ड्स में खत्म हो जाएगा. Hence या therefore करके you can very easily write. In those questions where solutions are not asked, there you can use way forward approach, and this is true across GS and optional as well. तो दो लार्ज ये तरीके होते हैं, एक तो जिस्ट या फिर एक वे फॉरवर्ड, जिसमें एक दो स्टेप्स. वे फॉरवर्ड में क्या होता है, सॉल्यूशंस बता देते हो चैलेंजेस के. क्वेश्चन में चैलेंजेस तक पूछा था, मान लो वो क्वेश्चन होता है व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशंस अराउंड एबॉर्शन, and the question ended there. So I'll write the positive implications, I'll write the negative ones, and then while concluding I'll give 2-3 steps कि ये करना चाहिए, streamline the laws and rules and regulations, conscience पे काम होना चाहिए, अपनी ड्यूटी की अवेयरनेस होनी चाहिए खासकर डॉक्टर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा. So these are the two approaches for conclusion of section A. Now conclusion of section B. सो 6 केस स्टडी आती हैं हर बार. इस बार भी 6 आएंगी, अगली बार भी 6 आएंगी. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट, आई बिलीव. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू माय क्लासेस एंड माय नोट्स, you will see that I have used n number of thinkers in conclusion, like Durkheim और क्यूकोगो, या फिर हेगल भी यूज करा है एक दो क्वेश्चंस में. कांत यूज करते हैं हम थ्योरीज में, कंक्लूजन में. हॉब्स यूज करा है कंक्लूजन में. सो देयर आर
few thinkers which can be easily used in conclusion depending whether the question is of public sphere or private sphere. आपने देखे होंगे सेशंस, so I'm not discussing that in detail in the doubt session. There are 4 different types of case studies that I have taught you: public, private, applied, and law. And for that I have identified various thinkers and keywords that can be used, and that basically has taken care of conclusion of case studies. How to read. ठीक है, so again what I am going to say is true not only for ethics but other papers as well. First reading of your material should be a plain reading. You should not even have any expectation from yourself while reading it for the first time कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा या मैं क्या कर रहा हूं, बस पढ़ लो, एक तरीके से आंख बंद करके पढ़ लो, बस गो थ्रू हो जाओ. सेकेंड रीडिंग यू ट्राई टू एसेस कि मतलब 10% 20% तो समझ में आना चाहिए सेकेंड रीडिंग में कि हाँ ये अभी पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, सुना सुना लग रहा है, पढ़ा पढ़ा लग रहा है, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, सब कुछ नया नहीं लगना चाहिए. इन द थर्ड रीडिंग यू ट्राई टू अंडरलाइन एंड ट्राई टू मेक नोट्स. थर्ड रीडिंग तक जनरली पता चल जाता है कि दिस इज अ टफ कंसेप्ट, दिस इज इजी कंसेप्ट, ये मुझे समझ में आ गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया है. सो इन द थर्ड रीडिंग ओनली अंडरलाइन. और इफ कंप्लीटली एकदम न्यू हो, थर्ड रीडिंग में भी बेसिक्स अभी क्लियर नहीं हुए, तो प्लीज नोट्स मत बनाना, अंडरलाइन कर लो. फोर्थ रीडिंग में फिर नोट्स बना लो. नोट्स में वही बनाना है जो मैंने ऑलरेडी बोला है, 40 to 50 keywords, example, theories, thinkers, nothing else. ठीक है, so this is a generic way of reading any study material for that matter, that the first reading should be a stock taking exercise. उसमें कुछ ज्यादा सोचते समझते नहीं है हम लोग. Second reading also largely a stock taking exercise, and in the third or fourth reading you underline and make notes. अप्लाइड एथिक्स पीडीएफ मांगी थी आप लोगों ने, रोज जो क्लास में अप्लाइड एथिक्स होता है, आई डू नॉट हैव दोस पीडीएफ्स विद मी राइट नाउ. दोस पीडीएफ्स आर इन सिस्टम एट ORN. when and if we go back to ORN I'll provide the same. एक क्वेश्चन आया था कि एथिकल डिलेमास जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं केस स्टडीज में. सो आई हैव डिस्कस्ड दैट इन द क्लास and especially in the last 3 classes as well. Ethical dilemmas होता है basically conflict between 2 or more values. Conflict between 2 or more values. ठीक है, तो जैसे honesty versus integrity या organizational interest versus personal interest, personal interest versus organizational duty, societal interest versus organizational interest. ये हो गए versus जिसमें यूज होता है वो डिलेमा होता है. एक होता है ethical issues like corruption, nepotism, favoritism, misuse of administrative discretion etc. तो ये जो ethical issues होते हैं, I treat them as dilemma itself. I do not separate them from the dilemmas. Now this is my strategy, my approach. I am 100% sure not many toppers will subscribe to it, but this is what has worked for me across my attempts. चाहे क्वेश्चन में इश्यूज पूछा हो या डिलेमा पूछा हो, I identify them both and I write both. I do not worry कि यार ये इशू नहीं है, ये डिलेमा है, ये डिलेमा नहीं है, ये इशू है. I try to identify them both. And as far as it goes that you are not able to identify, I have given a list of separate keywords with respect to dilemmas and all. कि पब्लिक सेक्टर के ये इश्यूज हैं, डिलेमास है, प्राइवेट सेक्टर के ये इश्यूज हैं, ये डिलेमास है. सो जस्ट गो थ्रू द इनिशियल पार्ट ऑफ केस स्टडी, try to find whether it is a public sector case study or a private sector case study, and then that list comes into play. It is as simple as that. Diagrams. ठीक है, diagrams I'll discuss. There are 11 types of diagrams that can be drawn in ethics paper. पहला तो हो गया आपका स्टेक होल्डर्स.
के लिए हब एंड स्पोक, सेकंड है फ्लो चार्ट. In any question wherein you can draw hub and spoke, you can draw flow chart as well. You can draw this sort of pie diagram: stakeholder 1, stakeholder 2, stakeholder 3, stakeholder 4, 5, 6. If there are 6 stakeholders, say, you can draw a hexagon as well: stakeholder 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेन डायग्राम आपको नोट्स में दिखाई होगा. This is ethics, this is say values, या this is ethics versus law कर लो, and this is the shaded common portion that reflects both ethics as well as law. Then in court based questions, I have identified 3 types of court based questions. So you can draw chronological diagram, particularly in chronology based court based questions, or you can draw this diagram in केस स्टडीज एज कोर्स ऑफ एक्शन एज वेल, कि पहले ये करूंगा फिर ये फिर ये. ठीक है, दीज आर द, ये 6 तो हो गए डायग्राम. फिर डिफरेंस का क्वेश्चन जहां आता है, यू कैन ड्रॉ दिस टेबल. दिस टेबल कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. ठीक है, एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन केस स्टडी एज वेल. वरना सेक्शन ए में डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस में इट कैन बी इजीली ड्रॉन. एक हो गया आपका डिसीजन चार्ट डायग्राम, के वेदर विसल ब्लो और नॉट, कि मैं विसल ब्लो कर रहा हूं या नहीं, येस नो. सो इफ आई एम विसल ब्लोइंग, आई एम अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, कॉन्शियंस. If I am not blowing the whistle, it may lead to no doer split, crisis of conscience, etc. Then there is a topic specific diagrams as well, like transparency, accountability, rule of law, and this is good governance. Similarly, 3 pillar diagram of Seottam, where these are 3 different pillars. Similarly, there are other diagrams as well for topics. ठीक है, ये 8 या 9 है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द रेस्ट 2 काइंड्स. अदरवाइज देयर आर 11 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स दैट कैन बी वेरी इजीली ड्रॉन इन एथिक्स पेपर. लास्ट, अभी किसी ने पूछा था ऑफलाइन सेंटर का. सो वी आर राइट टू नॉट फंक्शनिंग फ्रॉम ऑफलाइन सेंटर. आई एम 100% श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एट ORN. So when and if the center is reopened, we'll let you know. So we are not meeting anybody these days. ठीक है, thank you. I hope you are liking the sessions. Please remember whatever we have discussed today. That will help you in understanding the sessions better. Take care. Thank you.